अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देख रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि मुझे तस्वीर लेने का बहुत शौक है। कैमरा है मेरे पास, मैं कैमरे का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ फ़ोटोग्राफी के लिए, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ अपने फ़ोन का इस्तेमाल करूँ। फ़ोन क्यों? क्योंकि ज़रा कन्वीनियंट है। जब आप बाहर किसी के जा रहे हैं, किसी के ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो इतना अच्छा नहीं लगता कि आप कैमरा निकालें। और वैसे भी इस कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ मैं व्लॉगिंग के लिए, तो मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ। तो उसके लिए आई ओन अ गूगल पिक्सल 6 विच इज़ अ रियली गुड फ़ोन। लेकिन उसके थोड़े इश्यूज़ थे। अगर आप टेक न्यूज़ फॉलो करते होंगे आपको आइडिया होगा कि गूगल पिक्सल 6 हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सॉफ्टवेयर वगैरह, कभी कभार प्रोसेसिंग वगैरह के अंदर। अभी रिसेंटली गूगल ने इसकी एक एडवांस्ड वर्जन रिलीज़ की गूगल पिक्सल 6 की, कॉल्ड द गूगल पिक्सल 7 एंड द गूगल पिक्सल 7 प्रो। एंड आई हैव बीन अ रियली बिग फैन ऑफ दिस फोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई फाइनली ऑर्डर्ड इट। इस वीडियो के अंदर हम इस चैनल की पहली अनबॉक्सिंग वीडियो करेंगे। तो आए, आई थिंक द पैकेज जस्ट डिलीवर्ड, सो वी आर गोना गो चेक इट आउट। We got it. Let's go. So yeah, we have with us the Google Pixel 7 Pro. अभी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। So this is the Google Pixel 7. Let's start off by taking this off. ये पिक्सल 7 का बॉक्स है। ये फ़ोन था, मैंने निकाल दिया बाहर। एज यू कैन सी फ़ोन कम्स इन दिस स्नो कलर जो मैंने लिए है। फ़ोन की 3 कलर्स हैं। वन इज़ ऑब्सिडियन विच इज़ ब्लैक, वन इज़ थोड़ा सा हेज़ल कलर, one is lime green, one is snow. I really like the snow one. I got the snow one. And this is not the Pixel 7, this is the Pixel 7 Pro. इसका difference ये है कि यहाँ एक different telephoto lens है which makes for better photography, better zooming. And as you know, I'm a huge fan of photography with my phone. Camera के साथ भी करता हूँ, लेकिन phone is much more convenient, especially if you have one of the best cameras in mobile photography, which is the Google Pixel 7 Pro. So as you can tell, I'm very excited about that. लेकिन क्योंकि ये अनबॉक्सिंग वीडियो है तो सबसे पहले हम बॉक्स को चेक करते हैं। तो यू हैव द गूगल ब्रांडिंग इन दिस विच इज़ आई थिंक वन ऑफ देयर आई गेस पैकेजेस। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि कहाँ आप जा सकते हैं फॉर पिक्सल हेल्प एंड एवरीथिंग। दिस इज़ फॉर योर सिम कार्ड ट्रे बाहर निकालने के लिए। दिस आई अज्यूम इज़ दिस इज़ द मैनुअल, इंग्लिश, जर्मन, डिफरेंट टाइप्स में। आई एम लिविंग इन जर्मनी तो जर्मन वाला अंदर भी है, लेकिन स्टार्टिंग वाला इंग्लिश है, which is good if I want to learn something. This is an OTG, sorry, not OTG cable. I think it's called OTG, I'm not sure. This is basically Type-C converter adapter. तो जो regular आपके फ़ोन के चार्जर्स होते हैं वो Type-B होते हैं ना, if you know. So what you do is that you plug those old wires if you have like some really long wires that you want to use. And also जो फ़ोन का चार्जर है जो इसके साथ नहीं आया, जो मेरे पिक्सल 6 का चार्जर इस्तेमाल करूँगा, तो उसके अंदर सिर्फ स्पेस इसकी होती है Type-C की। As you can tell by these wires that are the final thing in the box, they're Type-C to Type-C, so the charger has to be Type-C. It can't be a regular charger. Let me show you the charger. This is the Pixel 6 charger, which is also the Pixel 7 charger. This phone can only like sustain 30 watt charging maximum. उसके ऊपर try करेंगे तो I'm pretty sure it's अंदर जो integrated circuit होती है, it won't really allow you to charge it faster. So it's not as fast as most phones like OnePlus या फिर Oppo. So yeah, the Pixel charger, as you can see. तो वो unboxing थी। अब हम phone को देखते हैं। मेरे हाथ में है। Like I mentioned before, this is the snow color. The reason I chose snow is because मैंने एक review देखा था MKB HD का, तो उसमें बता रहा था कि usually जो Pixel 7 की Pro versions हैं तो वो पीछे उनका gloss finish है ताकि ज़्यादा like they look like in his words jewelry। तो जो दूसरे phones हैं Pixel 7 तो उनका पीछे matte finish है। तो he says that if you have the blacker version जो मैं usually pick करता हूँ, this is my Pixel 6, तो Pixel 6 का मैंने black लिया था obsidian color में। तो he said if you pick the obsidian color, the problem is that आपकी fingerprints और आपका वो मतलब marks आना शुरू हो जाएंगे, so it doesn't really look that good। लेकिन if you choose the white version, इसमें as I can see right now, जितना आप touch करें there aren't like any signs of your fingerprints and it keeps on looking clean, so that's a very big advantage। तो अभी हम फ़ोन को on करेंगे। Welcome to your Pixel, let's go। साथ साथ दोनों फ़ोन्स को कंपेयर भी कर लेते हैं। तो दिस इज़ द Pixel 7 Pro और साथ Pixel 6 है। Pixel 6 की Pro वर्जन नहीं थी, लेकिन आप साइज़ डिफरेंस देख लें, इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ साइज़।
Pro version भी है लेकिन फिर भी it's almost the same. लेकिन if you look at the camera module, you see a little bit of a difference. So Pixel 6 का camera module, you notice it has a single bar. और if this was the Pixel 6 Pro, तो यहाँ एक होता है telephoto lens. लेकिन इसको Google ने change कर दिया because Google assumed that it didn't look that clean. तो क्योंकि देखें आप side से it doesn't really connect. लेकिन उन्होंने इसको replace कर दिया with the Pixel 7 and the Pixel 7 Pro camera modules. इनको अगर आप देखें कि बिल्कुल clean तरीके से side से जाते हैं. But this is their camera module as compared to the Pixel 6 camera module. अभी मैं इस फ़ोन को थोड़ा सेटअप करूँगा लेकिन I bought this transparent का cover, temporary cover. बाद में कोई heavy cover ले लेंगे लेकिन अभी के लिए the phone looks really good. I don't want to risk breaking it, so I'm just gonna put it inside its cover while the phone starts getting set up. So this video isn't supposed to be like a review of the phone क्योंकि मैंने फ़ोन अब तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन it's more of like I guess an introduction to the phone. If you want to shift your data to the new phone from any old device, any Android device, I don't think iPhone has this cable. अभी नए iPhones में आएगी. तो जो साथ केबल आई है USB-C to USB-C, so you plug one in to the phone. This is into the Google Pixel 7. And then if you want to shift all of your data from the old phone to this, so you just click this. Now both phones are connected. Both phones can even charge themselves. They have the capacity to do that, which is really cool. And yeah, it's gonna give both phones the option to transfer data, copy data to new device, copy data from old device, and then that way you get to have a very easy data transfer, a very quick data transfer as compared to using apps like clone phone या फिर internet के through करना. So it's gonna be very quick. अब मैं personally ये करता हूँ कि जब मैं नया phone इस्तेमाल करूँ, I don't really like bringing all of my old memories, photos and everything to the new phone. And you have a new phone, it's kind of nice कि आपको बिल्कुल fresh start हो. तो इसमें आपको ऑप्शन मिलती है कि if you wanna like transfer your data and change your data, you can choose which ones to keep and not. I'm gonna choose to not bring my photos into this new phone. तो इससे मुझे फ़ायदा हो गया कि phone has a lot of extra memory and कुछ apps होते हैं which you download on your phone but you forget about them. So I've been using the last phone for the last 1 year, तो मुझे idea नहीं है कि कौन सी मैंने अंदर apps डाली हुई हैं. तो when the data transfer and everything is connected, अब यहाँ से connection वहाँ जा रही है, but at the end after it just analyzes everything, मुझे बताएगा कि आपने क्या चीज़ रखनी, क्या चीज़ नहीं रखनी. So it's also like a good thing if somebody wants, they can transfer all of their data, and if somebody doesn't want to like have old clutter from your old phone into the new phone, then they can choose to avoid that. So phone setup हो गया, and it's really cool. The thing about this phone is it's known as the smartest smartphone. So it's one of the best Android phones, and Google made this to compete with the iPhone. I've turned it on. This is the fingerprint scanner, and if I just tap it, I'm assuming it takes like a few milliseconds more than you would expect, but it's much better than the Google Pixel 6. And it also has face unlock. So if I look at my phone right now, and it's unlocked, so I just have to. So really cool. Also, when you have like apps such as your banking apps and everything on this phone, you can only unlock them with your fingerprint scanner because Google has perfected that. But since it's really trying the new face unlock technology on this, they don't want to risk something like that somebody can access your wallet or something through your phone. So they have only allowed you to unlock your apps and your important apps, like your social media apps or any locked apps, with your fingerprint only. So that's cool. And yeah, its camera is amazing. Camera quality is really good. It even comes with this new cinematic blur feature. I think they're trying to copy iPhone there. While I'm saying this, I'm also recording my camera and everything around me with this phone, then a cinematic blur. So yeah, we'll see that in this video as well. But at the end, that is like a mini unboxing of the Google Pixel 7. Very excited to use this, and if you want to see me taking photos with this, you can follow me on my Instagram. And yeah, that is this video. Very small video. I hope it's not above 10 minutes. And yeah, channel dekhen, enjoy kare, and I will be posting more photos on my Instagram. So do like, share, subscribe this channel, and also if you want, check out my Instagram. Yeah.